अक्सर हमने देखा है कि लोगों को शॉर्टकट और हैंड होल्डिंग मिल जाए तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसा कंटेंट शेयर कर दें आपके साथ विच इज़ एवरग्रीन स्टॉक मार्केट टिप्स जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। सो 8 से 10 कुछ टिप्स है जो आप लाइफ लॉन्ग लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। The first tip is bear market rally, or you can say the bear market don't last forever and the bear markets are getting shorter and shorter. And इसको मैं एग्जांपल से कहूँगा, ऐसा नहीं कुछ हमें बात हो रही है 1980s की। अगर आप बेयर मार्केट देखो सो 2 साल 4 साल 5 साल तक बेयर मार्केट लंबे चला करते हैं। और अगर आप 2008 का क्रैश देखो, लेमन ब्रदर्स का जो क्रैश आया था उसके बाद में मार्केट ने जैसे रिकवर किया था तो 1 साल के अंदर मार्केट ने वापस से एक नया हाई बना लिया था 2009-10 के आसपास। सेम हैपेंड विथ 2020 कोविड क्रैश, मार्च में अपना मार्केट लो हिट किया था एंड देन आफ्टर कोविड क्रैश विद इन मैटर ऑफ 1 ईयर मार्केट अगेन अचीव्ड इट्स न्यू हाइज। सो इट सेज कि बेयर मार्केट जो है वो अभी धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहा है एंड बुल मार्केट की जो रैली होती है वो लॉन्ग होती जा रही है। एंड द फर्स्ट टिप is bear market doesn't last forever. So if you are stuck into bear market anytime, just remember this first tip कि this is not going to be forever, this shall to pass. Second tip is a cheap stock can get cheaper, and if you understand the business and have conviction in the business, you should buy more of it when it is cheaper because cheap stocks are not going to be cheaper forever. Okay. सो ITC की अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो ITC 220 के आसपास ट्रेड करता था जब मैंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था 2019-20 के आसपास। एंड देन कोविड केम एंड कोविड क्रैश में ITC का शेयर का प्राइस टूटा 200 से 180 या 160 एंड मैंने पर्सनली 139 पे भी सम शेयर्स ऑफ ITC बाई किए थे। इट वॉज वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए 138-139 गया था। आई जस्ट पंच मार्केट ऑर्डर एंड 139 समथिंग पे मुझे कुछ शेयर्स ITC के मिले थे एंड देन आई केप्ट ऑन बाइंग इट एट चीपर प्राइस एट 160, 165, 180, 90 के आसपास एंड 200 के आसपास आज मेरी ITC की अच्छी खासी मेजर अलोकेशन है इन माय पोर्टफोलियो एंड ITC इज ट्रेडिंग एट 300 राइट नाउ। सो आई कुड accumulate ITC at very cheaper valuation. Only reason was that I had अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एंड मैंने इसके ऊपर दूसरे एक चैनल फ्रीटन्स है उसके ऊपर एक डिटेल की स्टडी बनाई ITC पे समथिंग हाफ एन आवर की। सो कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट। लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड टिप विच इज व्हेन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाइम इज ऑन योर साइड. You can simply avoid checking your portfolio every day. So if you are a trader, definitely you can check your portfolio every 5 minutes or 10 minutes also. You have to sit in front of screen. बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपना पोर्टफोलियो डेली चेक करो. मैं तो कहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो, इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन एंड स्टॉक मार्केट इज नॉट योर मेन बिजनेस, इट्स बेटर दैट यू चेक योर पोर्टफोलियो लाइक प्रेफरेबली एवरी वीक और एवरी मंथ और सो. और अगर आपको ज़्यादा ही एक्टिवनेस रहना है तो बेटर इट्स एडवाइजेबल दैट यू चेक योर पोर्टफोलियो एट एंड ऑफ द डे रादर देन कॉन्स्टेंटली चेकिंग द स्टॉक प्राइसेस. क्योंकि आपके स्टॉक प्राइस देखने से ना स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला ना गिरने वाला है. इनफैक्ट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते गिरते रहेगा. इट्स बेटर एडवाइजेबल दैट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डोंट चेक योर पोर्टफोलियो एवरी डे. फोर्थ टिप इज व्हेन यू पैनिक सेल, यू सेल चीप. Again, this tip is going to help you very much when the market is falling. And जब मार्केट गिरता है तब लोग इतने घबरा जाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, एंड रीज़न भी उस टाइम पे बहुत वैलिड लगता है. जैसे कि कोविड के टाइम पे मार्केट में क्रैश हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई, पूरी दुनिया बंद होने वाली है. और इनफैक्ट लॉकडाउन भी लग गए थे जो आज तक पूरी दुनिया में हुआ नहीं था इन हिस्ट्री ऑफ अवर वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया अचानक से बंद पड़ गई, लॉकडाउन लगा. सो लोगों को ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, सब कारोबार बंद हो जाएंगे एंड वी आर इनटू डीपनेस. बट आज 2 साल फॉरवर्ड करके हम देखते हैं तो कोविड का जो स्कैर था, वन ऑफ द डेडलीस्ट स्कैर, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है. एंड दैट इज व्हाट मार्केट ट्रिक्स यू आउट टू सेल द स्टॉक्स एट चीपर वैल्यूएशन. एंड द रीजन में बी एनीथिंग, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, इन्फ्लेशन के रेट्स बढ़ने शुरू हो गए, कॉर्पोरेट डेट्स बढ़ना शुरू हो गया. ऐसे मार्केट आपके ऊपर टेंट्रम थ्रो करते रहेगा एंड हर बार आपको लगेगा कि हाँ भाई वैलिड रीजन है और मार्केट और गिरेगी.
एंड व्हेन यू फील द मार्केट और गिरेगा वाला जो फीलिंग आता है विच इज द पीक pain point, that is the time I think you should hold on to your horses rather than selling them out. So when you sell cheap, when you panic sell, you sell cheap, and you are the loser, and the person who is buying from you in the panic selling is going to make money. So it's better advisable कि you hold on to your stocks during panic selling. And this takes us to the fifth point, which is invest in red to enjoy the green. Many times I have asked people कि भैया जब मार्केट गिर रहा है और अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, बेचो मत, खरीदो, ये सही मौका है खरीदने का. बट लोग उल्टा करते हैं. लोग क्या करते हैं, जब मार्केट लाल होता है तब बेचते हैं और जब मार्केट ग्रीन होता है तब लेते हैं. और ये लोग जो करते हैं वो कभी पैसा नहीं बनाते जिंदगी में. एंड मैंने जब भी मोटा पैसा बनाया, मैंने जब मार्केट लाल है तभी लिया और जब मार्केट ग्रीन है तब बेचा. एंड बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मी इज ONGC. 60s में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था लोगों को कि ONGC ले लो, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ब्लू चिप स्टॉक यू आर गेटिंग एट प्रेजेंट. इस टाइम पे कोविड में क्रैश आया था एंड पीपल वर वेरी पैसिमिस्ट. लोग कह रहे थे कि नहीं ये 60 का 30 हो जाएगा. क्रूड भी नेगेटिव हो गया था उस टाइम, जो अगेन मैनकाइंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि क्रूड नेगेटिव चले गया था. एंड देयर आर सम वैलिड रीजन फॉर पीपल टू से कि चलो क्रूड जो नेगेटिव है उसके वजह ONGC भी नीचे चले जाएगी. However, the stock did fell from 60 to 50, not 30. I bought even more, something at 55, 54 plus. And then the market recovered and we sold ONGC at 3x profit. That is 180 के आसपास. So that is what helps you when the market is down. Recently जब यूक्रेन का वॉर हुआ था, यूक्रेन रशिया का वॉर, I asked people to buy a lot of quality stocks and the people who bought along with me made really great money in past 4 to 5 months. So that's how the market is. When you buying red to enjoy the green. And this is the most important tip. The tip number 6 is people who have succeeded in stock market went through thrill, defeat, periodic losses, setbacks and unexpected events. Though they hanged in and thrived market, when the market flourished. जब भी ऐसे कोई क्रैश आ जाते, जो भी आप इन्वेस्टर को, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को फॉलो करते हो, देख लो सभी ने मार्केट के पीक देखे, सभी ने मार्केट के बॉटम देखे, क्रैश देखे, वॉर देख लिए, इन्फ्लेशन देख लिया, कोविड आ गया, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश हुआ था. लोगों ने पीक भी देखा है एंड डाउनफॉल भी देखा है. बट ये लोग टस से मस नहीं हुए. दे कंटिन्यूड होल्डिंग द स्टॉक्स विद पेशेंस and eventually they end up making money 50x 100x after the event passed. बट लोगों को क्या रहता है ना, स्टॉक मार्केट जब बढ़ते रहता है तब लोग सोचते नहीं है कि स्टॉक मार्केट नीचे भी जा सकता है. एंड व्हेन द स्टॉक मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग, पीपल जस्ट स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द मार्केट. लोगों को लगता है कि भैया ये स्कैम है, यहाँ पे तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. एंड बिग इन्वेस्टर्स आर हियर टू लूट द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ऑल. काफ़ी सारे ऐसी बातें चलती है मार्केट में. बट नोबडी एक्चुअली केयर्स यार कि आप बिग इन्वेस्टर हो या छोटे इन्वेस्टर हो. बड़े इन्वेस्टर की भी उतनी बैंड बचती है जब मार्केट गिरता है और छोटे इन्वेस्टर की भी उतनी बैंड बचती है. कोई बचता नहीं है मार्केट गिरने से और बढ़ने से. सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर स्टॉक्स विद पेशेंस एंड once the market recovers you are going to make money. This leads us to 7th point, which is again very much important, and this is I really want कि सारे रिटेल इन्वेस्टर स्पेसिफिकली अपने इंडिया में ये चीज़ को समझ लो. The thing is not all stocks in your portfolio are going to make money. Even if 5 or 6 stocks make money for you in your portfolio and 4 to 5 stocks are losing money, इट्स एब्सोल्युटली ओके यार. सारे के सारे स्टॉक्स जो अपने पोर्टफोलियो में होते हैं वो कभी पैसा नहीं बना के देगा आपको. डोंट विन एक्सपेक्टेशन की 100% स्ट्राइक रेट होगा. सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते हैं एंड सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, सेंचुरी बनाई उन्होंने. सो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स आपके जो है पोर्टफोलियो में परफॉर्म करेंगे. एंड अगर आप सोचते हो तो टू बी वेरी फ्रैंक आपकी विशफुल थिंकिंग है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. लेजेंडरी इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे हो गए, पीटर लिंच हो गए, अपने यहाँ पे झुंझुनवाला एंड केडिया, सारों ने लॉस खाए हुए अपने स्टॉक्स में. सो दैट इज हाउ इट इज. इवन इफ यू मेक 5 to 6 कंपनीज विच आर इन पोर्टफोलियो,
which are making great money for you, you are the winner at end of the day. So 4 to 5 stocks in your portfolio, if they are into losses, it's absolutely fine, nothing big deal out of it. And that's what I sincerely want all the investors to understand. The eighth tip is that the market is highly unpredictable in the short term. आप कितना भी कॉल ले लो कुछ भी कर लो, you can't predict the market in short term. तो 3 महीना 6 महीने का ट्राई पास अगर आप लेके चलोगे कि चलो मैंने कॉल ले लिया कुछ भी, it's not going to help you in a longer time frame. What's going to help you is the long term thinking. And when I say long term thinking, I speak for 10-20 years. I don't speak for 2 years, 3 years. So if you think long term thinking is 2 years, 3 years, that's not how it is to be. And I'm pretty much sure, looking at India's economy, stock market is always going to go up provided your time frame is 20-30 years or at least 10 years. So short term market is highly unpredictable, in long term market is highly predictable. Ninth tip is ability to ignore general public panic will help you go a long way into stock market investing. और ये जो पॉइंट है ना, इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट द बिहेवियरल फाइनेंस, बिहेवियरल साइकोलॉजी. मार्केट जब गिरता है तब लोग झुंड में बेचते हैं, मार्केट जब चढ़ता है तब लोग झुंड में खरीदते हैं. तो एक पैनिक सेलिंग जो आप हमने पहले डिस्कस किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द पर्सन हु इज़ बाइंग फ्रॉम यू व्हेन यू आर पैनिक सेलिंग इज मेकिंग मनी एंड यू आर एंडिंग अप एज अ लूजर. सेम हैपेंस व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग. लोगों को फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे भैया मार्केट बढ़ रहा है, अभी अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूँगा. ज़िंदगी में एक बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है हर बार. ऐसा कभी भी नहीं होगा ज़िंदगी में कि आपने स्टॉक मार्केट में कोई रैली मिस कर ली और आप बर्बाद हो जाओगे कि चलो अभी मैंने रैली मिस कर लिया, अभी तो मेरा ज़िंदगी खत्म हो गई. ऐसा कभी नहीं होगा. स्टॉक मार्केट में रैलीज आती रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती है साइमल्टेनियसली. सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी में मत रहो कि जब लोग बेच रहे तो तुमने ही बेच दिया. जब भय का माहौल है, फेयर का माहौल है, तब लोग बेच रहे आप भी बेच रहे हो. और जब एकदम ऑप्टिमिज्म है, एकदम बूम है, तब लोग भी खरीद रहे हैं एंड आप भी साथ में खरीद रहे हो. एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिर रहा है तो गिरते रहेगा, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ते रहेगा. मार्केट डजंट गो इन सिंगल डायरेक्शन. एंड देयर इज अ फनी illustration, or you can say funny example, my father shared with me a couple of years ago. Is this is share market. Okay, और शेयर मार्केट का अगर आप शेयर का एस हटा दो तो क्या होता है? हैर होता है, HARE. हैर मतलब खरगोश. तो ये जो खरगोश है ना, खरगोश अगर आपने देखा होगा उसकी चाल, तो खरगोश कभी कूदता है कभी बैठता है, वो सीधा नहीं चलता है. इट कीप्स ऑन जंपिंग. तो कभी ऊपर गया कभी नीचे, कभी ऊपर गया कभी नीचे. सो दिस इज शेयर मार्केट. इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यूसली गो इन अ सिंगल डायरेक्शन. कभी बढ़ रहा है तो कंसोलिडेट भी होगा, उसके बाद में गिरेगा भी. जब गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं गिरते ही जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. वो भी कंसोलिडेट होगा एंड वो भी बाद में रिकवर होगा. सो एज फार एज पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, प्लीज़ अवॉइड फॉलोइंग द जनरल पब्लिक. एंड मैंने तो अपना एक रूल बना दिया है कि जहाँ पे जो काउंटर में जनरल पब्लिक का कॉन्सेंसस है ना कि भैया यहाँ पे पैसा बनेगा सबसे ज़्यादा, आई डोंट इन्वेस्ट इन दैट काउंटर. इवन इफ बिगेस्ट investors or biggest businessmen are into the particular business, because that counter is already crowded. So you usually don't end up making much money when the news is already out and when everybody knows कि this particular stock or business is going to make money for you. And last but not least is, it's very easy to panic in this stock market business. I say business because at the end of the day you are buying and selling the companies, and only a businessman can understand and make money out of stock market if you interpret it as being a part of the companies you are buying, rather than simply buying and selling the piece of shares. or अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करते हो कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट यू आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग डिजिटल शेयर्स,
chances are very less that you are going to make money. So it's very easy to panic into stock market because it is very volatile business. There is no certainty in stock market. Sometimes, as I already said, it's rising and people are very optimistic. They dream big, they plan कि चलो stocks बेच के घर खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, Mercedes खरीदेंगे, and within few days and within few months the market crashes and all their dreams are just collapsing along with the stock market. And people start panicking because now real money is on the line. People need to feed their children, their family. Entire family is depending on somebody, so it's very easy to panic into this very volatile business. There is no certainty. So as much as possible you need to maintain your calm and always remember that this shall too pass. Whether the market is up, whether the market is down, it is not going to be same. And if you follow all these principles, I think you are going to make decent money. So stay calm, be patient, and stay on the course with your investment as long as the business prospects are strong for the companies of your portfolio. So these were some of the 10 tips which I dearly follow, and touch wood, these have helped me stay calm and composed when the market is falling. I get really great opportunities to accumulate great businesses at good valuation. And simultaneously, when the markets are rising, I try to control the urge to join the crowd, join the herd, and save money. And sometimes I may even end up selling some of the stocks which are making money in the bull rally. That is how we make money, my friends, over here. I'm sure that these 10 tips will help you lifelong, and wherever the market is either in the extremes, I hope that you listen to this particular piece of advice and get comfort in doing the right things into the stock market. With that, I'll close. Take care.